अखिल भारतीय राष्ट्रीय કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા દેશમાં સંગઠનને મજબૂત બનાવવા સંગઠન સૃજન અભિયાન શરૂ કરાયું। ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ સમિતિની શ્રી ગિડુગુ રુદ્રરાજુની અધ્યક્ષતામાં નડિયાદ સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ। અભિયાન અંતર્ગત સંગઠનની કામગીરીની સમીક્ષા કરવા ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ સમિતિના ગિડુગુ રુદ્રરાજુએ જિલ્લા કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો કાર્યકરો સાથે ચર્ચા કરી। 22 એપ્રિલના રોજ થયેલા આતંકવાદી હુમલાના 26 શહીદ થયેલા સ્વજનોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી સરકાર આતંકવાદને ખતમ કરવા જે કંઈ પગલાં લેશે સમગ્ર દેશના લોકો તેમની સાથે છે। સૃજન અભિયાન અંતર્ગત ખેડા જિલ્લાના વિવિધ તાલુકામાં 4 દિવસ દરમિયાન બેઠક યોજાશે। આ બેઠકમાં પીસીસીના ઓબ્ઝર્વર પરેશ ધનાણી, જસુભાઈ પટેલ, સિદ્ધાર્થભાઈ ચૌધરી, પ્રગતિબેન આહિર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बेलगांव सेशन में जो अधिवेशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ उसमें एक निर्णय लिया था। उससे संगठन को स्ट्रेंथन करने के लिए, खासकर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए पार्टी ने निर्णय लिया था। उस सिलसिले में गुजरात एक रोल मॉडल बना के, पायलट प्रोजेक्ट बना के राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व में यहाँ गुजरात से हमने ये शुरुआत कर रहे। इस सिलसिले में एआईसीसी ने हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एआईसीसी ऑब्जर्वर सीनियर लीडर को नियुक्त किया, 4 पीसीसी ऑफिस बेयर्स को नियुक्त किया। हमने इस डिस्ट्रिक्ट में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में घूम के सबसे मिलकर सबसे बात करके नया एक अच्छा डीसी प्रेसिडेंट देने के लिए हम पीसीसी को एक पैनल सबमिट करेंगे, तो उससे एआईसीसी निर्णय लेगा। सर, ये जो जम्मू कश्मीर की घटना हुई उसके बाद में जो भारत सरकार ने एक्शन लिए है उससे आप क्या खुश है, सहमत है? और इससे भी ज़्यादा एक्शन लेना था। उससे जितना एक्शन लिया उससे भी ज़्यादा एक्शन लेना। पहले अभी इतना टेक्नोलॉजी डेवलप होने से, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, आपका आईबी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल्यूर है उसमें। क्योंकि इतना एक दिन में तो ये सीन ऑफ ऑफेंस नहीं होता है। उसको रेक्की किया, उसको कैसा करना, क्या करना किया, वेपन्स लेके ओपनली गया, उसमें 100% सिक्योरिटी लैब्स है। कल दिल्ली में जो विपक्ष की पार्टी का नेता लोगों का मीटिंग हुआ उसमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली एडमिट किया कि इट्स ए सिक्योरिटी लैब्स ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ इस देश में, ट्रेन एक्सीडेंट के लिए एक हमारा कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नेता रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिजिग्नेशन किया था। ऐसा इतिहास था कांग्रेस पार्टी का और हमारा लीडरशिप का। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पोजीशन, दे आर एंजॉइंग पोजीशंस विदाउट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, होम मिनिस्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, नोबडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। So this has to be taken it very seriously because it's not the question of the 26 lives. अगर कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता में होती और ऐसा इंसिडेंस होता तो क्या आप करते? This is all hypothetical. So when we are in power, we dealt with so many issues. We ourselves sacrificed our personalities, but we never allowed any bad incidents in this country. So we used to take care of all the precautions because at that time also Kashmir was a burning issue and PV Narasimha Rao ji was there. See, there are so many issues. Assam issue was there, Punjab issue was there, Jammu Kashmir issue was there. Then Rajiv ji was there. Assam Accord was signed by Rajiv Gandhi ji and Praful Kumar Mahanta. So we have dealt with so many issues internally, time to time. It's not new for the Congress party. Definitely Congress would have been dealt in a better way rather than this भारतीय जनता पार्टी। सर, आतंकवादी इतना बड़ा हमला हुआ है तो केवल कांग्रेस पार्टी सरकार को सपोर्ट करके बैठ जाएगी कि कुछ आगे करेगी? 100%. What all the support as a principal opposition party, because Congress party is having 100% Lok Sabha MPs in the strength, and definitely we will support on the floor of the house as well as in the interest of the nation and in the interest of the security of the people of India. Congress party is going to support the government of India definitely. At the same time, we'll have to sensitize the people, the failure of the Bharatiya Janata Party. See, terrorists will not have any religion. Terrorists will not have any caste. आप terrorist बोलो तो terrorist है. Terrorist के लिए वो हिंदू terrorist, मुस्लिम terrorist ऐसा नहीं रहता है. Terrorist is terrorist. We are against the terrorism. So we don't tolerate the terrorism in this country. But
Government of India's failure is also there. IB intelligence agency failure is there, military intelligence failure is there, research and analysis wing will be there, that failure is there. Usually Jammu and Kashmir sensitive areas, 3-layer security will be there. There is no security at all. That's why even people from Gujarat state also, they lost their lives there because they have been there on holiday. Nobody expect this. Unfortunately, this has happened. So the other states, same thing had happened in Karnataka. Karnataka government took utmost precautions to get those bodies and to console these families. What happened to Gujarat government? You have double engine Sarkar. You are having the central government as the state government. No response from the state government to get the bodies, to take care of these families. This is very bad on the part of the Gujarat government. So we don't want to make it a political issue, but it's a very serious issue. You need to have, any government has to have a social responsibility. They should have a concern towards the society or the people of the state, which is lacking in Bharatiya Janata Party. Okay.